हेलो एवरीवन वेलकम टू डिप्सास एकेडमी। चलନ୍ତୁ आज ये वीडियो स्टार्ट करिया कोन ना हमर मेथड्स ऑफ टीचिंग पार्ट टा जा अछि आउ टीचिंग एड्स कोन बा टीएलएम कोन यूज हुए तो से रिगार्डिंग चलନ୍ତୁ हम डिस्कशन करिवा। चलନ୍ତୁ वीडियो स्टार्ट करिया ठीक अछि। तो फर्स्ट हो हमर कोन ना दैट इज द मेथड ऑफ टीचिंग। तो कोन मेथड्स यूज होचे एक्चुअली हमर गोटे लर्निंग बा गोटे इंस्ट्रक्शन देला बळे तो से रिगार्डिंग चलନ୍ତୁ देखिवा कोन हमर अछि। तो फर्स्ट हो हमर कोन ना basically the teaching methods are the approaches and strategies that techniques teachers use to facilitate the learning, and they can be broadly classified into the one is the teacher centric, another one is the learner centered and activity based methods. तो जो methods of teaching हमर रहिला कोन ना तो कोन रहिला हमर तीन प्रकार रहिला one is the teacher centered, learner centered and activity based method। तो कोटा बेसी इफेक्टिव रहबो पढिले एंड कोटा हेल्पफुल हबो अन्य जन को बेसी बुझेबार आ बुझिबारे भी। तो सेई विषय रे देखिया कोन अछि। तो उचित नेक्स्ट जो अछि हमर कोना मेथड्स ऑफ टीचिंग रिफर्स टू द जनरल प्रिंसिपल्स pedagogies and management strategy used for classroom instruction। जहाँ classroom instruction ପାଇଁ बेसिकली हमर कोन यूज हुए ना जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हमर जहाँ भी मेंशनड अछि तो सेटा मैं यूज करी थाउ। तो के यूज कर मे भी टीचर सेंटर्ड के लर्नर सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड कि के दुईटा को मेथड भी लाइक लर्नर सेंटर्ड और एक्टिविटी बोथ मेथड्स भी यूज करें। तो थर्ड वन हो हमर कोन ना द चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स डिपेंड्स ऑन द एजुकेशनल philosophy, classroom demographics, subject areas and organization mission। तो जहाँ भी हम रहा चॉइस ऑफ टीचिंग और मेथड्स रहा ता बेसिकली कौन डिपेंड करे ना हमर एजुकेशनल फिलोसफी ऊपर, क्लासरूम रो डेमोग्राफीज ऊपर और सब्जेक्ट रे कौन एरियाज और कहाँ ऊपर सेटा को सब्जेक्ट एरिया रे बेसी फोकस कले बेसी इंपैक्टफुल रहबो लर्निंग टा सेटा ऊपर बेसी बहुत ही लाइक प्रायोरिटीज दिया है जेठी आ गुटे होची नेक्स्ट होची हमर कन ऑर्गेनाइजेशन मिशंस कौन अछि ठीक अछि। तो द फॉलोइंग मेथड्स आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग ठीक अछि। तो नेक्स्ट कोन देखिबा ना हमर जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स कोन अछि आउ लर्नर सेंटर्ड मेथड्स कोन अछि। तो टीचर सेंटर्ड अंडर रे कोन आसला हमर ना लेक्चर मेथड आसीबो, तोरे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आसीबो, डेमो और प्रैक्टिकल मेथड्स आसी एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड आसीबो ठीक अछि। तो इथरा हमर कोन आसीबो ना डिस्कशन मेथड्स आसीबो, ग्रुप मेथड्स आसीबो, लर्नर सेंटर्ड अंडर रे एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आसी आउ नेक्स्ट होची हमर कोन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आसीबो। तो टीचर सेंटर्ड मेथड होची हमर कोन ना फर्स्ट होची हमर कोन समस्त जानथि एटा जे लेक्चर मेथड ला होची मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर टीचर सेंट्रिक मेथड्स। तो ओके तो लेक्चर मेथड रे कोन हबो ना दिस इज द वेरी ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड played in the educational institution जोड़ा हमरा ancient like oldest and earliest period जोड़ा हमरा यूज होखला जो मेथड that is known as the oldest method of the or the way of teaching। okay, this is also known as the one way channel of communications। तो communication basically एटा हमरा होचे हमर कोन ना एटा होचे हमर basically one way process of communication where कि कोन ना only teacher ही तार lecture deliver करिवो and जो थ्री टीचर ही only active रहबा स्टूडेंट एठी कोन ना passive learner भाबरे काम करिवो किंतु बोथ जोटी दुई जण इन्वॉल्वमेंट रहबो सेटा कोन ना इंपैक्टफुल हे परिवो ठीक अछि। तो कोन लाने एठी हमरा द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन दिस मेथड ऑफ द टीचिंग इज जस्ट टू लिसन हम काम हला कोन खाली स्टूडेंट माने सुनिबे एंड समटाइम्स पेन डाउन जहां भी नोट तो डाउन कर देबे बस सेति एंड सम नोट्स इफ नेसेसरी ड्यूरिंग द लेक्चर्स एंड कंबाइन द इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज इट आउ जहां भी नेसेसरी अछि इंफॉर्मेशन ताको ऑर्गेनाइज्ड वे रे एंड ताको को बस लिखिबे सेति के ही तार काम अछि हैला। तो नेक्स्ट हो जे हमरा कोन ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होची कोन ना इट्स अ काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन बा कि छोटे स्किल्स को प्रैक्टिकल बेस्ड मेथड ओडा देखियो दैट इज नोन एज अ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रो होची हमरा कोन इज अ टीचर सेंटर्ड or teaching technique in which it is a kind of the teacher centered teaching technique in which the teacher shows the explain कौन करिवे ना एठी explain करिवे और illustrate करिवे concept को और skill को while student observe and understand the process।
It is widely used in the subject required for the practical learning or the skill development ପାଇଁ ଏଟା widely a demonstration method ଟା basically use हुए and such as the science experiment ପାଇଁ use ହବ ଏଟା then next ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଯୋଉ laboratory work ରହିଲା ଆମର various kind of laboratory work ପାଇଁ ଆଉ ଆମର କଣ ରହିବ ନା ଯୋଉ technical trainings ରହୁଛି ତ ସେ regarding ବି ଆମର use ଆମର କଣ ନା demonstration method ଟା okay ତ next ଆମେ କଣ ଦେଖିବା the direct instruction method तो ए method रे कौन हमने केमती directly like one way communication way रे direct instruction दा without any illustration without demonstration or without giving any examples केमती direct instruction दिया हुए देखियो so direct instruction is a method in which the teacher explicitly teaches the new information to students through through ना lectures रे explanations and demonstrations followed by and guided and independent practice through रे so it emphasis कौन कला ना clarity ऊपर वैसे emphasize कला और एटा को repetitions करिया and mastery learning ऊपर like बारंबार practice करिया ऊपर एटा को बहुत importance देला कोड़ा ना हमरो जोड़ा अच्छा हमरो कना direct instruction method ठीक अछि next that is a drill and practice method हला तो एटा होचे काइंड ऑफ द मेमोराइजेशन मेथड माने बारंबार विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी कांसेप्ट जोनो को बारंबार माने प्रैक्टिस करिया को हबो किछ विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग किछ भी से रिगार्डिंग जोनकर नॉलेज नथियो बट तांको कुआथियो बा एम्फसाइज कराउथि ना यू हैव टू रिकॉल ऑल these things okay so in this method ko hochi na amara students repeatedly perform the same type of the task or exercise until they achieve the accuracy speed and confidence तो ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବୁଝିବେନି କନସେପ୍ଟ କଣ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାହବ in order to make perfect scorer it is the most effective memorizations ଏଟା ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ମେମୋରାଇଜ କରିବାରେ ଜିନିଷକୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆଉ ହାବିଟ ଫର୍ମେସନ କରିବାରେ ଏଟା ଏ ଡ୍ରିଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥାଏ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଲର୍ନିଂ ଫର୍ମୁଲାସ୍ ଯୋଉ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଲାଇକ୍ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲେ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଏମିତି ଘୋଷିକି ମାନେ ପିଲା ଲାଇକ୍ ଜଣେ ଜାଣୁନଥିବ ହାଉ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହବ କି ଏଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କି ହାଉ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍स ବଟ୍ only ଜଣେ ରିମେମ୍ବର କରିଥିବ only formulas को that is known as a kind of drill and practice method then ଆସିବ ଆମର କଣ ନା multiplication tables ଆସିବ grammar rules ଆସିବ or scientific of laws ଆସିବ କିଛି like H2O CO2 carbon dioxide ର symbolic formula CO2 ଏ ସବୁର symbolic formula that ମାନେ ଘୋଷିବାକୁ that is known as a drill and practice method next that is known as the learner centered method जोटा कि टिके impactful रहइबो as comparison to the teacher centered method एथरे हमर कोन आसुची तो फर्स्ट होची हमर कोन डिस्कशन मेथड तो डिस्कशन मेथड रे कोन आसीबो इट इज अ टीचिंग ग्रुप एक्टिविटी ठीक अछि तो डिस्कशन मेथड रे टू वे कम्युनिकेशन होची लेक्चर मेथड रे जणे कम्युनिकेशन करछु वन वे कम्युनिकेशन टाइप रो एंड डिस्कशन मेथड रे दुई जणा का इन्वॉल्वमेंट एठी नेबे वो टीचर भी नेबे एंड स्टूडेंट भी नेबे तो दी जणा का इन्वॉल्वमेंट रहले कोन हबो ना लर्निंग टा होरी इट इज अ मोर इंपैक्टफुल हे परिबो ठीक अछि तो डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज अ ग्रुप एक्टिविटी इट काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द टीचर एंड द स्टूडेंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोन प्रॉब्लम अछि एंड हाउ टू सॉल्व इट सेटा तांकर बेसिक फोकस रहइबो कि केमते सॉल्व करिवे गोटे प्रॉब्लम को लाइक सम क्रिएटिविटी आसीओ जणकर डिस्कशन कला परे नो आइडियाज क्रिएट हबो नो आइडियाज जनरेट आल्सो हबो ता ऊपर बहुत प्रायोरिटाइज दिया एंड सॉल्यूशन भी मिलिबो and discussion is a method described as a constructive process in involving the concurrent activity in listening thinking as well as speaking ability तीनटा ability thre आसी अछि listening speaking and thinking ability of the student next that is the group work तो group work तो होछ हमर कोन ना इट्स अ काइंड ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग तो जोड़ा कि एम्फासाइज करछ हमर कोड पे ना कोलैबोरेशन पे और कम्युनिकेशन पे एंड शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे ग्रुप वर्क रे ठीक अछि एंड इंस्टेड ऑफ लर्निंग इंडिविजुअल और पैसिवली स्टूडेंट वर्क टुगेदर एटे पैसिव से माने एटे माने एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहिबे गोटे ग्रुप वर्क रे पर्टिकुलर ग्रुप टास्क पे समान को असाइन करा तो
ଗୋଟେ particular group ଏଥିରେ କଣ involvement ରହିବେ and କେମିତି ଏଟାକୁ solve କରିବା and to get the conclusion ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା basic aim ରହିବ and ଏଥିରେ ସେମାନେ actively involvement also ନେବେ ତ ଏଟାର କଣ ହବ ନା work together in a small group to solve the problem ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି solve the problem and complete the task or discussion ideas and while teacher acts as a here ଆଉ ଯୋଉଠି problem ରହିବ କଣ ଏଥିରେ teacher basically act କଣ କରିବ ନା as a kind of that is a facilitator or a guide ହିସାବରେ କାମ କରିବ then next that is the third problem based learning out a kind of learner centered activity so problem based learning ରେ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା basically problem based learning ଟା emphasize କରୁଛି କଣ engage the students in investigation କରିବା ପାଇଁ and analyzing the real life situations where there is no single correct answer student identify what they need to learn research solutions and keep their knowledge collaboratively fostering the deep understanding rather than the rote memorization तो problem based learning होची कौन तांगो problem दिया हबो that कि केमती solution बाहर करिया ପାଇଁ तो ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ନା ଆମର ତାଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସେମାନେ ଏଠି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନେବେ ଆଉ ରିଅଲ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ସହିତ ବି ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହିସାବ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏନହାନ୍ସ କରିବାକୁ ଜଣଙ୍କର କଣ ଆମର ମାନେ ହାଇପର ଡିଡକ୍ଟିଭ ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ କୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଆବିଲିଟିଜ କୁ ଯୋଉଟା କି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ नेक्स्ट दैट इज द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टा हमर कोन फोकस करूची इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बेसिकली एनकरेजेस टू लर्न थ्रू द इन्वेस्टिगेशंस इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टा बेसिकली फोकस करूची हमर कोन ना इन्वेस्टिगेशन थ्रू रे दैट की केमती लर्न करियो ठीक अछि एंड इट बिगिंस विथ ए क्वेश्चंस और प्रॉब्लम इंक्वायरी माने कोन ना जणे से रिगार्डिंग इंक्वायरी करबा क्वेश्चनिंग आसीबो से प्रॉब्लम टा को केमती डील करा जो सेटा रिगार्डिंग and various questions arise करिवो आउ कोन करिवो ना lead to the exploration आसीबो गोटे आइडियाज exploration आसीबो evidence रो collections आसीबो कोन कोन इतमे necessary और conclusion भी एथरु मिली जीवो inquiry based on inquiry करले लास्ट रे फाइनल ट्रुथ रे पहुंची जीवो and the goal is to help the learners think like scientist scientific ability develop करे जनक भितरे like observing hypothesizing and testing and reasoning hypothesizing माने होची हमर कना तुमको हाफ ट्रुथ बस से रिगार्डिंग फाइनल ट्रुथ रे पहुंच जाओ जनको हेल्पफुल हबो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टारे और द टीचिंग एड्स कोन कोन हमर एठी यूज होची लाइक टीएलएम कोन कोन यूज हबो हमर फर्स्ट होची हमर कना सपोर्ट मटेरियल इज वेरी एसेंशियल इन व्हिच अफेक्ट्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस it is a valuable resource it includes the textbooks institutional design of magazines, journals, periodical, etc. It is important to select such as an effective support material which could be useful in transmitting the knowledge among the learners. कौन को teaching it basically helpful हबो करना to make the learning more meaningful पाई तो कौन आसुची एथिरे ना एटा actually माने VF को or acts as a supplementary material that support the teacher in explaining, illustrating and reinforcing the lessons. ठीक ଅଛି आरो कौन रहिबो नाटे लर्निंग टाको मोर रियलिस्टिक करिया पई एंगेज करिया पई एंड लास्टिंग बाय द विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक विजुअली देखिया पई एंड ऑडिटरी सुनिया पई काइनेस्थेटिक माने होचे हम कहले एक्टिविटी बेस्ड पई ये हेल्पफुल हबो तीनटा जिंस एथरे माने एंगेज हे परिबो एंड माने एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट भी नहीं परिबो तो टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स रे कोन हमर आसुची फर्स्ट होचे हमर रेडियो आसीबो ऑडियो एड्स रे हमर कोन आसुची ना रेडियो आसीबो ग्रामफोन लिंगोफोन टेप रेकॉर्डर तो विजुअल एड्स रे हमर कोन आसुची ना चार्ट्स आसीबो पिक्चर्स आसीबो मॉडल्स आसीबो मैप्स आसीबो प्रोजेक्टर आसीबो तो आउ नेक्स्ट होचे हमर कोन ऑडियो विजुअल जोटा के हम सुनी परियो देखि परियो तो कोन एथरे इन्वॉल्वमेंट होची टीवी हे परियो ड्रामा शोज हे परियो साउंड हे परियो एंड मोशन फिल्म्स इन्वॉल्वमेंट अच्छी ठीक अच्छे तो विजुअल एड्स रे हमर कोन आसुची ना फर्स्ट होची हमर कोन ना दैट इज द ग्राफ्स तो ग्राफ्स कोन होची हमर खाली हमें ग्राफ्स कोन करे हमर इट्स अ काइंड ऑफ टीचिंग एड दैट विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा टाको जोड़ा कि हमर रिप्रेजेंट करियो काहाकू ना कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टाको गोटे इजी वे रे हेल्पफुल करियो अंडरस्टैंड पई कंपेयर पई और एनालिसिस पई जोड़ा कि हेल्प करे स्टूडेंट को that to grasp the concept like trends relationships
and comparisons by providing a visual format that is more engaging and memorable than the text alone, and especially the visual learners. So it basically grabs the helpful of କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଆମର ନ୍ୟୁମେରିକାଲି ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ଡାଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମର କଣ ରହିବ ନା ଆମର କମ୍ପେୟାରିଂ ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ବି ଏଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଠିକ ଅଛି। ଚାର୍ଟସରେ କଣ ଆସିବ ନା ଚାର୍ଟସ ଆର୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ that simplify the complex information, illustrate the relationship and cater to the different learning styles through the visual representation ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। Then next, that is a model. Model ଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କଣ ନା it's a kind of 3D model, three-dimensional, and represents used as a teaching aids to make the complex or abstract concept more concrete and understandable. ଠିକ ଅଛି। जो complex concept ଗୁଡା ରହୁଛି ଆମର ତ ତାକୁ ଆମର କଣ ନା 3D through ରେ ତାକୁ ଟିକେ more easier କରିପାରିବ, like ଜଣେ ଯେମିତି ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଆଉ logically ଏଟାକୁ represent ବି କରିବ obviously। ଆଉ ଏଟା କଣ କରିବ ନା allow the students to visualize and interact with the subject and improve the comprehension and retention by making the learning more engaging and memorable ଠିକ ଅଛି। Then next, that is the maps। The maps କଣ କରିବ ନା maps are the versatile teaching aids that enhance the spatial means ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଜଣଙ୍କର geographically based knowledge କେମିତି ରହିବ। It is a geographical content knowledge। ଜଣଙ୍କର geographically content knowledge ବା ସେଇ area ବା location wise ଯାହା ବି knowledge ଅଛି by through the maps visually ଜଣଙ୍କୁ represent କରିପାରିବ maps ଟା, and problem solving ଆଉ engagement ପାଇଁ by providing a visual representation of the world and ଯେମିତି ଆମର geography ରେ specifically maps ଯେମିତି ଆମେ use କରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଠିକ ଅଛି। ତ projectors କଣ use ହବ ନା projectors are the versatile teaching aids that enhances the learning by making lessons more visual, engaging and interactive ହେଲା। ଦେନ୍ ଅଡିଓ ଏଡ୍ସ ରେ କଣ ଆସିବ ନା ଅଡିଓ ଏଡ୍ସ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର କଣ ରେଡିଓଟା ଆମର କଣ ୟୁଜ କରି ଲାଇକ୍ ଆମର ଇଗ୍ନୋର ଯେମିତି ଅଛି ରେଡିଓ ଲାଇକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଅର ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ୟୁଜଫୁଲ ହୁଏ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଆମର କି ଆମର ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତ ସେଥିରେ available ଥାଏ। The radio is an accessible and economical teaching aids that can be used to improve the listening and speaking skills। listening ଶୁଣିବା ଜଣେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଲ ଶୁଣିଲେ ତାର ନା ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲରେ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ଚାରିଟା ଫର୍ମୁଲା ଅଛି LS RW, listening, speaking, reading and writing। ମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣିଲେ ଲାଇକ୍ ତାର ସେ ଜଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଇଂଲିଶ ଭଲ ହଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ତାର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ବି ଡେଭଲପ କରେ। ତାପରେ as well as ତାର ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ବି ଡେଭଲପ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ବି as well as ଡେଭଲପ ହବ। ଦେନ୍ ଆମର କଣ ଅଛି ନା broaden the knowledge, general knowledge ବି also ଆମର burden ହବ and make learning more engaging by audio programs ଠିକ ଅଛି। gramophone କଣ ହବ ନା gramophone along with the other radio aids like the lingua phone is a teaching tool that primarily improves the listening skills and correct the pronunciations, too largely replaced by the modern technology like the tape recorder and CDs and digital player, and its a historical role in the language and musical education was significant. Then that is a tape recorder. The tape recorder are versatile teaching aids that allow the teachers to record and play back sessions and students' conversations and or export speech to support the various learning needs. And then the digital audio player. तो आर काम होचे हमर कोन ना the DAPS or the digital audio player हमर कोन करे ना powerful teaching aids that can be enhance the learning through the various applications from the language development ପାଇଁ कोन music education ପାଇଁ basically हमर एटा यूज हुए। Then by engaging the students in the auditory learning, and DAPS or the digital audio players facilitate the better information retention and create a more dynamic, engaging and accessible learning environment ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। And while once referring to dedicated the device like MP3 players, and the term now includes the devices of the software that can be store करियो और play करियो that audio files रे ठीक ଅଛି। देन आम जोड़ा भी शुणी पार देखिपर ना हूँ आम कौन ना ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये कौन आस
aids which involve in the sense of hearing as audio visual aids, and this is the most effective and useful than other teaching aids. तो ऑडियो विजुअल एड्स टा हमर होचे हमर कोन ना सबठो यूजफुल टीचिंग एड्स तो एथरा हमर कोन यूज होबो ना दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड यूजफुल देन अदर टीचिंग एड्स एंड मोर देन वन सेंस साइमल्टेनियसली obviously ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ରେ କାମ କରୁଛି ଏଥିରେ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଦିଟା ସେନ୍ସେସ୍ କାମ କରୁଛି and these are the ICT based teaching support system तो ଏଥିରେ ଆମର କଣ କଣ ଆସୁଛି ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଟେଲିଭିଜନ ଆମର କଣ ନା ଆମର ଯେମିତି କି ଆମର ଆସୁଛି ଆମର କଣ ୟୁଜ ଟୁ communicate the information ideas skills and attitudes. It enhances the quality of education and reduce the dependency on the verbal teaching and teachers. It provides the mass education opportunities. Something computer similarly con useful hoji is a good example of the ICT based teaching support system. It can be defined as by electronic device that allows the students to access the internet to research and create and complete the work. Exactly, the film stills and films. Knowledge about the various functions and discoveries and other information related to the discoveries and other information related to the subject can be imparted with the help with the film stills and films. And pen tab. The pen tab pen tab also kind of audiovisual aids called use हुए ना. It is a digital drawing tablet जोटे कौन यूज हुए ना कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस भाବରେ काम हुए जोटे कि एनेबल करे यूजर्स मानु टू हैंड ड्रॉ द इमेजेस एनिमेशन करिया पे ग्राफिक्स रे भी यूज हुए एंड पेन टैब और द पेन टैबलेट इज अ डिजिटल टीचिंग एंड एट दैट सर्व एज ए वर्चुअल व्हाइट बोर्ड अलाउइंग जोटा कि वर्चुअल व्हाइट बोर्ड हिसाब रे काम करे आल्सो तो एजुकेटर मानक स्पेसिफिक कराटा बहुत यूजफुल थे कोथिपाई ना राइट पे ड्रा पे एंड एनोटेट कंप्यूटर स्क्रीन यूजिंग अ स्पेशल स्टाइलस ठीक अछि तो थैंक यू एवरीवन आ वीडियो भले नियति लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे थैंक यू